The preparation going on, revision and preparation, everybody. Abdullah. यस सर। हाँ जी, प्रिपरेशन जी क्या कैसे हुआ चल रही है? सर? प्रिपरेशन तो क्या बताऊं मैं, अभी तो मेरी थर्सडे से तो छुट्टी शुरू हुई। और थर्सडे के दिन ही लाइक मेरी सिस्टर आई है इंडिया से। सो अच्छा लाइक अच्छा, आई वेंट टू दैट्स ग्रेट. पिक हर अप। सो आई एम लाइक काइंड ऑफ एंजॉयिंग दिस वीकेंड विद हर एंड देन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन। Yes dear, along with the like it's good that you are basically सिस्टर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बट साइड बाय साइड अपनी जी प्रिपरेशन भी चालू कर दो आप, हाँ, ठीक है? ये सर आई लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम संडे एंड ऑल बिकॉज दैट्स ग्रेट. लाइक वन दैट्स वीकेंड आई फाइन. कैन एंजॉय राइट। ओके ओके, दैट्स ग्रेट. या सो बिकॉज सबके लाइक आपके हॉलीडेज अनाउंस हो गए? हाँ, मेरी तो हॉलीडे चली रही है, थर्सडे से यस शुरू हो सर। गई मेरी। अच्छा, दैट्स फिर तो सही है, अच्छी बात है. फिर तो अपने टॉप गियर डाल दो. वही तो, अरे तो मैं 6 गियर पे ऑलरेडी चल रहा हूँ, बोली तो 7 गियर पे चला जाऊँ। आप अपने टॉप गियर ले लो. और क्योंकि आपके एग्जाम देखो, इस टाइम पे आपका जो है ना, बिल्कुल स्कूल वूल जाना कुछ नहीं है, तो आपके 6 घंटे तो यहाँ मिल गए आपको. 6 में से अगर आप 4 घंटे भी दे दोगे बहुत है. यस ठीक है. सर। तो 6 में से आप देखो, 6 प्लस 6 घंटे का स्कूल होता है आपका, या ज्यादा होता है? हाँ नहीं, 6 समथिंग लाइक दैट या। अच्छा अच्छा. तो देखो, अगर 6 घंटे का स्कूल है आपका, और लाइक उसमें आपका 2 घंटे का आप मान के चलो कि लाइक वो होता है ट्रैवल वगैरह, तो 8 घंटे आपके जा रहे हैं. अगर 8 घंटे में से अगर आप 6 घंटे भी, वो 4 घंटे या 5 घंटे भी दे रहे हो अपनी स्टडीज को ना, सेल्फ स्टडी को, इनफ है यार. इस टाइम पे अगर इतना भी दे रहे हो तो इनफ है. व्हाट अबाउट यू समीना? एंड लाइक हु इज देयर? अच्छा, अभी करिश्मा ने ज्वाइन नहीं किया. हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, I'm fine. What about you? आई एम फाइन डियर, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. सो स्टडीज वगैरह सही चल रहे हैं आपकी समीना? Yes sir. चलो ठीक है. अच्छा चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल किए थे, मिक्सचर किए थे. बेसिकली दोनों टाइप के हमारे पास, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन हमारे एक ही सर्किट में थे. तो ये सबको सॉल्व करना आ गया. चलो मैं एक क्वेश्चन Yes देता हूँ sir. आपको. लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन, एंड मुझे चेक करना है कि किस किस को आया. बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बट एटलीस्ट आप लोग और जो मैंने देखो, मैं जो क्लास में न्यूमेरिकल्स कराता ना, एटलीस्ट उसको जरूर प्रैक्टिस किया करो आप. ठीक है? तो उससे क्या होगा ना, बेसिकली आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग करते चले आ रहे हैं, और करे मतलब बेसिकली हमने किए हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डन सो फार, राइट? जस्ट गिव मी अ सर सेकंड. हाँ अब्दुल्ला. आई हैड अ डाउट इन मैथ्स। हम्म. अब्दुल्ला, लाइक मैथ्स, मैथ्स वाला डाउट नहीं, मैथ्स पे ले लेंगे. क्या हुआ, छोटा बताओ सा बताओ चलो. था। हाँ हाँ, बताओ चलो, पूछो. एक्चुअली सर, हम्म ये प्री बोर्ड्स चल रहे थे मेरे, तो मैं लाइक हम्म ये लर्निवो के होमवर्क्स नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली हम्म मैं भी फ्री तो हुआ हूँ थर्सडे को, प्री बोर्ड्स हम्म खत्म हुए मेरे। तो मैं लाइक आई वाज डूइंग माय ऑल द होमवर्क्स लर्निवो हम्म वाले हम्म yesterday. So like हम्म सर, there was one probability question, I guess हम्म question number 4, last one. हाँ. So I was doing that. So sir, in while हम्म like substituting the value, हम्म I got it in confusion. Like it was some I guess 132 defective pens were mixed हम्म with 40, 30, something 12 bad ones. So sir, हम्म जब उसको probability निकाल रहे थे that it is a good pen, so we हम्म divide 132 by total number of pens 144. So I had a doubt in that if we deduct it by 12, so we get हम्म. 11 by 12, but if we deduct it by 2, so we get 33 by 9. So which one should we use? हाँ अब्दुल्ला, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन ज़रूर देख लूंगा. मुझे ऐसे थोड़ा सा लाइक प्रॉपर आइडिया नहीं आ पा रहा है, तो मुझे क्वेश्चन देखना होगा डियर पहले. तो आप मुझे ना, मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे. ओके, सेंड इट टू Okay, मी ऑन द व्हाट्सएप, और वो चीज़ हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? चलो एवरीबडी जल्दी से क्वेश्चन करो. डू दिस क्वेश्चन एवरीबडी, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन और नॉट. देखो सीबीएसई में, that it's like it's very genuine that CBSE gives you a very cake walk type question, but it's also genuine that CBSE will give you these kinds of question that we have done so far in the class. So that's why I'm preparing for both scenarios, right? I don't want that you should skip these kinds of question, like, okay, so if we are doing this chapter, if we are doing this topic, so we should have we should do this topic in the depth. So that's what we are doing right now. Do this question, and then we'll be starting the electric heating effect of electric current.
second last topic of the chapter. And in the next class, inshallah, we'll be done with this chapter. Because two chapters are there, which is magnetic effects of current and the human eye. Both are very easy chapters and directly straightforward. And majority of the part of those chapters has been deducted so far. Like in the magnetics, like majority of the, you can say, electromagnetic induction, electric motor, electric generator, these are completely omitted. Is there anybody who has these topics in their syllabus? From the magnetics, anybody? I think सबके स्कूल में syllabus complete हो गया है ना? Yes, sir. Is there anybody जिसके टॉपिक कौन सा? Okay. डियर श्वेता, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, लास्ट टॉपिक से आपके No, sir. नहीं ना? हाँ, बिकॉज लाइक जितने भी अभी तक मैंने 10th क्लास के जो फिजिक्स बैचेस लिए अभी रिसेंट में, उनमें से सबके ये टॉपिक ओमिटेड है. दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग दैट किसी की अगर टॉपिक है तो मुझे बता देना, मैं उसको अलग से दे दूंगा क्लास. और ह्यूमन आई में आपका उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कट हो गया होगा शायद से, ओमिटेड है. एंड एक और ओमिटेड है लाइक हाँ, डिलेड सनराइज एंड सनसेट. No, sir. Twinkling of stars we have. यू हैव, अच्छा अच्छा, देखो 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 यही चीज है कि लाइक किसी मिडिल ईस्ट स्कूल में ये टॉपिक है, किसी में नहीं है. दैट्स व्हाट लाइक इट मेक्स अ लिटिल लाइक केओस. सो Yes. चलो कोई नहीं, उसको देखेंगे हम. बट लेट्स डू दिस चैप्टर एंड फाइनलाइज दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल. और न्यूमेरिकल्स में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद दिस. सो इसको अच्छे से करना है. और होमवर्क भी दूंगा मैं आज आपको इसके बाद, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के. टेम्परेचर इतना डाउन जा रहा है. लाइक अभी मैं थोड़ा सा लाइक डेयरी पे गया, लाइक आई जस्ट वेंट टू द डेयरी टू बेसिकली परचेज सम मिल्क. माय एयर्स आर कम्प्लीटली चिल्ड. बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है दिल्ली में इस टाइम पे. So Delhi is basically like you make a cup of tea and you are going to drink it oneself, and your mom calls you, and you look up at your mom, and जब फिर वापस नीचे देखोगे तो चाय पूरी जम गई. हाँ नहीं, इतना नहीं है, बट हाँ ऐसा है. दैट्स ट्रू. No, actually, I saw it in Harsh Benwal video. Like they just exaggerate the things. चलिए ये क्वेश्चन करो अब्दुल्ला जल्दी से आप. इजी सा क्वेश्चन है. डू दिस क्वेश्चन. Sir, 9 ohm. Who is this? Like who's giving the answer? Please let me know your name. Samina. Okay, Samina dear. I will just give me a second so that I all can complete. Then we'll verify. You said 9 ohm ना? Okay. Yes, sir. Okay, ठीक है. Sir, We'll me too. verify. अच्छा करिश्मा, आप? Okay, करिश्मा. Yes, sir. 9 ohm. Okay. What about rest of you? Yes, जल्दी sir. से answer. Yes, sir. Okay. That's great. Easy सा क्वेश्चन है, सिंपल सा. देखो ये क्या क्वेश्चन है कि लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन टू यू इन द सर्किट. अब्दुल्ला आपको कुछ आंसर आया? मैं आपके लिए जरूर वेट करता हूँ देखो, और आप ही आंसर नहीं देते हो मुझे. सबसे लेट मैं Nice. वेट करता हूँ, फिर मुझे अल्टीमेटली ऊपर आगे चलना होता है, क्योंकि मैं Nice, सोचता हूँ sir. कि Nice. अच्छा पक्का सो खुद से सॉल्व किया है. Yes, sir. चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट. देखो एवरीबॉडी लुक एट दिस. ग्रेट सिंपल सा क्वेश्चन था. लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, नाउ सी दिस थिंग, you can see this thing. This is the common joint for these two resistors, right? It means that they are in parallel, right? Yes or no, Yes. everybody? Yes, So sir. so effective resistance of R12 will be equals to 1/6 plus 1/6. So it will be equals to 1/3. R12 will be equals to 3 ohm. ठीक है? And the R equivalent will be equals to R12 plus R3, which is equals to 3 plus 6, which is equals to 9 ohm. So that's the answer. Correct, everybody? Oh, Yes, sir. क्या हुआ? Yes, sir.
अरे यार जस्ट गिव मी सेकंड, मेरे पेन अपना आप ये ऑटोमेटिकली उल्टी सीधे लाइंस ड्रॉ कर रहा है। जस्ट गिव मी सेकंड, मुझे दोबारा से रिकनेक्ट करना, जस्ट गिव मी सेकंड। क्लियर? चलो, सो okay, so there are some question in the previous in the app as well, so you can also go and check out those questions to practice. Okay, those are PYQs question, like majority of the questions are we have done so far will be a similar kind. Okay, so you can practice those questions as well. As you know, we are very time constrained right now. Okay, sir. We have done almost करिश्मा, आप कह रहे थे कि क्वेश्चन अच्छे से कराना, आप बताओ आप कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? देखो हमने ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस किए इस टॉपिक के इन द नहीं, क्लास sir. इटसेल्फ, इन द Yes. क्लास इटसेल्फ। देखो मैं काउंट करता हूँ, लेट्स लुक, एक एक दो, सॉरी 1 2 3 4। सर वो वाले पाँच। क्वेश्चन कब आएंगे जो मैंने आपसे पूछा था, लाइक उस टाइप के? कौन सा वाला क्वेश्चन? अच्छा वो मैथ। सर्कुलर वाला जो आपने क्वेश्चन पूछा था। वो करिश्मा देखो, लाइक वो बहुत रेयर केस है, ऐसे क्वेश्चन 12th बोर्ड्स में आते हैं, आने को आपके में भी आ सकते हैं, बट दोज चांसेस आर वेरी लेस। क्योंकि वो क्वेश्चन लाइक बेसिकली सीरियसली मैं बताऊं ना, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज आल्सो देयर इन 12th क्लास, व्हिच इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस चैप्टर। लाइक यू विल बी डीलिंग विद अदर इंस्ट्रूमेंट एज वेल, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, these instruments will be there in the electricity chapter। तो उसमें आपके लाइक वो ज्यादा थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आई डोंट थिंक सो दैट वो 10th बोर्ड्स में के लेवल का है, वो 12th बोर्ड्स का, बट टीचर ने सॉल्व इसलिए कराया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, जस्ट फॉर दैट। ठीक है? तो एग्जाम में इस टाइप के आएंगे ना? हाँ करिश्मा, यस यू आर सेइंग समथिंग क्या? सर मैंने ये बोला एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे ना? हाँ एग्जाम में देखो आप इसी टाइप के आएंगे। देखो पीवाईक्यूज आप गो थ्रू करोगे ना, जो ऐप में है आपके, पीवाईक्यूज करोगे ना आप गो थ्रू, तो उसमें देखना आप उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमने अभी किए हैं। ओके। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन होंगे। आई एम नॉट सेइंग वैल्यू भी सेम, जस्ट सिमिलर काइंड्स। जो कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने बिल्डअप किया आपका, दैट विल बी द सेम, नॉट मोर देन दैट। ठीक है? हाँ, सो शैल वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, राइट एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, देखो इस दिस टॉपिक इज आल्सो कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, Okay, sir. हीटिंग इफेक्ट ऑफ। अच्छा, everybody now tell me, the wire that we use in the heater, you have seen that wire, so when you basically pass the electric current through that wire, what it becomes red, yes or no? Almost red or orange? Yes, sir. Yes, sir. So have you आपने कभी like have you imagined like ये किस that what's the reason behind that thing, why this wire becomes red but your outer part of the heater, or you can say that everything is basically working normally, but only the wires gets heated, and there is a Sir, because current very is flowing through it. okay, ये रीजन आपको अब्दुल्ला बता रहे हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू, समीना की एंड श्वेता, करिश्मा एंड हिबा एंड आदिल? हाँ जी, यस एवरीबॉडी? Yes, सही यही है, सही है वो। अच्छा, ओके, करिश्मा एग्री कर रही है अब्दुल्ला के साथ। व्हाट अबाउट हिबा एंड रेस्ट ऑफ यू? Yes yes, sir, I sir. think he's right too. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो बेसिकली रीजन ये होता है, देखो द रीजन बिहाइंड इज दैट आई हैव टोल्ड यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, डू यू रिमेंबर? आई थिंक Yes, एवरीबॉडी वाज sir. देयर इन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टॉपिक, राइट? Yes. So in that resistor and resistivity, I have told you that electrical appliances like electric toaster and electric heater, and you can say electric geyser. You have seen a geyser that basically used to basically heat the water in the winters. Okay, so these kinds of appliances use the nichrome wires, the high resistive materials. Yes or no? Yes, but they are very expensive too. So like I'm just telling you, that's why the appliances are very expensive, right? So I've told you that. Yes. So basically what happens is that the current, when basically the high resistivity means it offers the very high resistance to the basically the current that is flowing through it. Okay, so suppose one thing, okay, just one thing, assume that thing,
you take your hand right now in front of me, rub them just for a moment, just like this. It will become hot. Rub. Arey, yaar, everybody, can you please switch on a camera so that we can have a better interaction, everybody? Yes, sir, I did. Chalo, karo, jaldi se. Like, I will be only watching your videos. None of you can watch each other's videos, right? I'll be the only one who can watch the videos. And okay. So please, if it's possible, so please open so that we can have better interaction, because it's almost end of the session and I haven't seen the face of my student that I've been teaching. छुपे रुस्तम अब्दुल्ला, आपका फेस नहीं दिख रहा, किसी का नहीं फेस दिख रहा मुझे. सर सब लोग कैमरा बंद क्यों नहीं, सीरियसली. अच्छा चलो ठीक है, आप लोग नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं है. हाँ, अब्दुल्ला ने, करिश्मा, चलो दैट्स ग्रेट. अच्छा देखो, rub your hands like this. So basically you will feel a kind of heat, yes or no, because you are rubbing each other. So same thing happens. Electrons tries to move because electrons is flowing. It means that the current is flowing, right? Who basically electricity is generated by the flow of electrons. Obviously, simple thing here. Yeah. So, but the resistance says no, you are not allowed. Resistance oppose the flow of current, which means that it basically pushes in the backward direction, from which direction basically the electron is coming, right? So it's just same thing. In the hand, one hand is going upward direction and one hand is going in the downward direction. So you have feel that there is a kind of heat is generated, right? So same phenomena is also applied here in this you can say situation. When the electron is not allowed to flow through the conductor very easily, it generates heat. That's why if you use the normal material, that material will melt, just like the copper wire, or you can say the aluminum wire. But we use the materials that is very highly resistive. Yes or no? That offers the high resistance. Basically, the specific resistance of those materials are very high. Is everybody clear to my point? Yes, sir. Yes, Clear? sir. Sure? Okay. Yes, sir. yes, Yeah. sir. So basically, that effect is called as heating effect of current. Electric current. Let me add the electric current word as well, because current is also used for the water flow. Okay. So heating effect of electric current. Clear? Hai? Okay. Yes, sir. So that's what. So basically, that's this law, or you can say this phenomena, is used in the electrical appliances that have very you can say a high resistive wire, just like the electric toaster and the electric geyser and electric heater and all the things. Like you have the hair dryer as well. So in the hair dryer, you have seen And the that. grills Yes, Abdullah. and the electric grills Huh. and all. So that's and you basically, if you continuously use that electric like basically what was I saying, dry hair dryer, so it will become red. If you see the Yes, inside coil, it will become the red. Okay. Yes. Yeah, chalo, theek hai. So basically, this topic in the NCERT is given after the electric power. But if you want to understand the electric power properly, so that's basically I prefer to basically teach this topic before the electric power. Okay. sir, does the quality of wire degrade when we, like constantly over a period of time we use Yes, like obviously, dear. nichrome wires Obviously. and like Obviously, for constant okay. time, like you have, that's why it's advised to use good you can say quality of wires that are like tested and assured. Yeah, Okay. yes. Clear, And a good everybody? fuse also, 13 ampere fuse. Yes. Am I clear to everybody? Please answer to Or me. else Yes, boom. sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, that's great. Okay. Let me write down the definition, or you can say a kind of statement regarding it. So when an electric current is passed through a high resistance wire,
Nichrome wire. ऐसा इसलिए होता है, मे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन ने पूरी फुल एंट्री फीस नहीं पे की हो। ठीक है, सो समटाइम्स हैपन। देखो जब आप कहीं नहीं, जैसे आप किसी लाइक किसी जगह फुल पे नहीं करो तो आपका अलाउड नहीं होता ना एंटर करना। तो ऐसे समझ लो आप। Yes. वायर बिकम्स, देखो 3 टॉपिक्स से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, second is the heating effect of current, third is the electric power, and the, you can say the commercial Heating units वगैरह वाले टॉपिक है ना आपके, जिसमें आपको कैलकुलेट करना होता है that how to calculate the electricity bill. When I was ninth and 10th, I've Yes. calculated my own electricity bill. मतलब इसमें देखो सब्सिडी वगैरह भी होती है, बट हाँ उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे थे और प्राइस ऑफ 1 यूनिट, सो दैट्स आई गॉट टू नो ओके ओके, ऐसे तो मैंने ये चीज अप्लाई की थी इन माई ओन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ माई हाउस. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग. किस किस लाइक आपके यहाँ फिजिकल बिल आता है, पेपर टाइप और ऑनलाइन? लाइक अब तो इंडिया में भी दोनों चीज है, बट हाँ हमारे पास अभी फिजिकल बिल आता है इंडिया में. सो किसके, इंडिया में आता है, हाँ इंडिया में इंडिया में वहां पे तो शायद सब ऑनलाइन हो एकदम कम्प्लीटली पेपरलेस. यहाँ पे Yes, sir. ऑनलाइन इंडिया में आते हैं. हाँ तो लाइक इन इंडिया अभी हमारे जैसे BSES हमारे राजधानी जो वो है कंपनी जो हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भेजते हैं, बट हाँ UPI सर्विसेज के थ्रू भी हमारे पास ऑनलाइन बिल आ जाता है. तो इट डिपेंड्स. तो अब अगर आप देखोगे ना, अगर कभी आपको मौका मिले, व्हेनेवर यू हैव द काइंड So ऑफ, do you use GPay? यस आई यूज द गूगल पे. I have all the UPIs, Google Pay, Phone GPay, Pay. sir. Okay, clear everybody? Yes, yes, Becomes very hot Yes. Yes. because of the flow, like hot and produce heat. कुछ दिन से राइटिंग बहुत डिग्रेड हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. दिस इज कॉल्ड दी, एक तो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी टाइप जिस पे मैं लिखता हूँ ना, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, तो आई नीड अ लिटिल बिट लाइक रफ area to write. So high heating, this is called heating effect of current. Hmm. क्लियर? yes. आपने फ्रिक्शन का नाम सुना है कभी? किस किस ने फ्रिक्शन का, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द वर्ड्स फ्रिक्शन, वर्ड लाइक फ्रिक्शन? Yes, sir. Yes, आई थिंक सबने सुना होगा, बिकॉज आप लोग साइंस के स्टूडेंट होने जा रहे हैं. फ्रिक्शन का Obviously. वर्ड तो सुना ही होगा. अच्छा देखो, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, हम लोगों को स्लिप होने से बचाना, राइट? बेसिकली द फ्रिक्शन प्रोवाइड्स यू द स्टेबिलिटी. एवरीबॉडी यस और नो? yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी Yes. एग्रीज टू मी? Yes. हाँ, तो बेसिकली फ्रिक्शन अलाउज और बेसिकली गिव्स यू द स्टेबिलिटी व्हाइल वॉकिंग, while you can say Yes, climbing and sir. all the things. Friction is the everybody, like if you basically, if I'm basically holding this pen, so there is a friction between my hand and the pen, that's why I'm able to basically hold it. If it's there is no friction, it will slip with my hands. If you basically apply some soap or kind of thing, so you won't be able to basically hold this pen properly, because the basic, because there is a very less friction between the hand and the pen, right? So similarly, so resistance provides a similar kind of friction, because friction basically opposes the motion, yes or no? Friction opposes the motion, so same here, resistance opposes the flow of electron. So basically friction और resistance ना एक type of cousins है, ये समझ लो आप. रेजिस्टेंस जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है, और फ्रिक्शन आपका मैकेनिक्स में चले जाता है, जो लॉज ऑफ मोशन वगैरह टॉपिक है. ठीक है, तो कजन्स मान के चलो आप उनको. क्लियर है? Yes, The role of resistance in electrical circuit. Mhm. Similar to the role of friction. How many of you have the book Eschand and Eschand book?
सॉफ्ट कॉपी मैंने आई थिंक शेयर की है बैच में। अब मुझे बताओ आपके पास किन किन स्टूडेंट्स के पास वो बुक है, किन के पास नहीं है। हैंड रेज कर दो अपना आप इन द No, चैट। sir. नहीं है आपके Sir, I पास? didn't receive anything. यार ये बुक मैंने शेयर की थी काफी पहले, 2-3 दफे शेयर कर चुका वीडियो हूँ। अच्छा रुको रुको रुको, अभी ये आपके पास आ जाएगी, अभी रुको जस्ट अ सेकंड, क्लास में अभी जस्ट अ सेकंड, मुझे शेयर करने दो। ये बुक जो है ना, आप लोग जरूर देखो, डेफिनेशंस वगैरह के लिए ये बुक जरूर फॉलो करना होगी। अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आप होता है कि क्लास के सर क्या बाद, है सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? रुक जाओ जस्ट अ सेकंड अब्दुल्ला, शेयर विद। So can you read the second line? हाँ अब्दुल्ला जस्ट अ सेकंड, Yes. मैं Okay. मेरा Okay. Okay. कौन सी सेकंड लाइन है? ये नाइक्रोम इलेक्ट्रिक करंट वाली अब्दुल्ला, ये वाली लाइन, नाइक्रोम वायर द रेजिस्टेंस वायर becomes very hot and produces heat। अभी देखो आप सब मुझे कंफर्म करना है किस किस के पास आई है। सबके पास अपने अपने मोबाइल है राइट नाउ जिनसे आप लर्निंग को रिसीव होता है मैसेज? No, sir, Yes, I sir. don't. I won't have my mobile right now. अच्छा ठीक है। अच्छा जिनके पास है मुझे एक्चुअली मुझे बताना आप अभी किस किस को रिसीव हुई है, प्लीज आप रेज योर हैंड्स इन द चैट। जस्ट अ सेकंड, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, कैमरा ऑन कर रहा हूँ। अच्छा समीना को मिल गई बुक, व्हाट अबाउट श्वेता? ओके करिश्मा को मिल गई है, और हिबा को भी रिसीव हो गई है, और किसको रिसीव हुई है? 3 स्टूडेंट्स को रिसीव हुई है ना, ठीक है हिबा। अच्छा किरण, आर यू देयर डियर? Yes, sir. I didn't receive it till now. ओके डियर, Oh जस्ट no, लेट मी I नो। just did, sir. I just did. Okay, okay, okay. Actually, like you were just silent, so I didn't get to know that you were there in the class. Did you join late? Yes, sir. A bit. Okay, okay, dear. Okay, try to join the class on the time. Okay, Yes, sir. ठीक है, everybody lower your hands. जिनको नहीं मिली है आप वो Sir, I received. Sir. प्लीज प्लीज वो raise your hands जिनको नहीं मिली अभी तक. Is there anybody who hasn't received the book yet? Like आदिल, आप तो एक दफा चेक कर लेना जब आपके पास मोबाइल आ जाए, ठीक है? I think everybody, आपको Okay. सबको मिल गई बुक? Yes, sir. अच्छा ठीक है। Yes. So basically this book is very good. I also followed this book in my 10th and 9th, and this book in India like हर एक बच्चा फॉलो करता है इंडिया में, तो खास तौर पे आप भी फॉलो कर सकते हो जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स। अगर आपको लाइक जो मेरे नोट्स वगैरह हैं इनसे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आपको और डीप में चाहिए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, देखो मैं रियल लाइफ लेता हूँ, इसमें थोड़ा आपको रिटर्न होगा, तो जो मैं बोलता हूँ तो हो सकता है आपको वो जहन में ना रहे, but sometimes that you want more examples more and more regarding the topic, so you can go through this book. This book is very good, it's completely fine book. For the physics it's complete, with respect to numericals, with respect to content, with respect to the definitions and all the thing in very simplified manner. ठीक है, clear? Yes, yes sir. or no? ठीक है चलो, so so is this clear to everybody? Yes, Okay, sir. let's derive the formula Yes, sir. for this. Okay, let's derive the formula. So okay, so basically everybody tell me, work done in terms of potential and charge is what? Can anybody tell me the formula of work done in terms of charge and potential? This is the second topic that we have done in this chapter. How many of you remember this? इसको याद नहीं क्या सच में, सीरियसली? फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। Q into V, voltage is equals to what? Potential difference is equals to what? Work done upon unit charge. Do you remember? Yes, sir. Work done by Yes. time into current. Work done is So potential like work I've done told you by the time formula. into current. Yeah, I got to know, but I was just asking that work done is, I've told you that the potential into the, basically I've told you the potential difference is equals to work done upon unit charge. Basically the amount of work done required or to be done to carry up, you can say
a charge from one place to another place? Yes or no? A unit charge basically. Okay. And from the definition, okay, now we have to basically calculate the value of charge and voltage, okay, in terms of I and R. I is electric current, R is resistance, right? This can be a 3-marker derivation type question in the school exams. It states Joule's law of heating. I'll be stating that thing, okay? And the you can say this this derivation 2 to 3 line calculation is there only, not more than that. Okay. Now we have the current in terms of, so this is equation number 1. So we have I is equals to Q by T. Yes or no? So can we Yes. calculate the value of Q in terms of I and T as I into T? Suppose this is Yes, our sir. equation number 2. And similarly, we have Ohm's law. Ohm's law says that V equals to IR. This is our third equation. Now put the second equation and third equation into the first equation. How? This equation is giving you the value of Q and this equation is giving you the value of V. Clear? Substituting. Equation in, clear? W is equals to, work done is equals to, you can say, I into T into V, sorry, I into R. I into I is I square R T. That, and basically that work done is what? That work done will be equals to the heat generated, heat produced. एनर्जी Yes. उतनी ही तो रिलीज होगी ना Yes, जितनी sir. हमारा वर्क बेसिकली हीट रिलीज हुई है. Yes or no? Yes or no, everybody? Yes, Yes, sir. sir. Clear? So Yes, sir. yeah. So basically all the electric energy that has been used is completely converted into the heat energy. Yes or no? Because we are using electric energy to generate heat energy. That's what we are doing now. Yes, sir. Okay? Yeah. So let me write this basically. Yeah. All energy consumed is converted into heat energy. ठीक है, heat energy में convert हो गए. So I can write H as I square RT. Clear, everybody? Yes, sir. Yes. Any doubt? No, sir. No, sir. Yeah. So this law is called as Joule's law of heating. What is called as Joule's law of heating? If the heat energy is directly proportional to the square of the current or directly proportional to the resistance or directly proportional to the time for which the current is passing, okay? It's law of heating. I hope it's clear to everybody. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure. Okay, so let Yes, me sir. give you the idea. And this formula can also be written in terms of V, potential difference. How? In this value I, can I use Ohm's law? From Ohm's law, V is equals to IR and I can be written as V by R, yes or no? So suppose this is equation number 4 and this is equation number 5. Can I equate the value of I in the equation number 4? Can I substitute, yes sir. or no? Okay. Yes, sir. Substitute equation 5 in equation 4. So a heat energy comes out to be V square by R square into R into T.
So this r square will cancel this. So it will be equals to v square by r into t. So these formula are there to basically you have to like use this formula. Like if the current is given, you can use the this formula above formula. If the voltage difference, potential difference is there, you can this formula. And one more formula is there that will be, I will be giving you that formula. Basically, I'm just writing it. That formula can be written as V into I into T. Okay. So this formula will like you will like get to know about this formula in the power chapter like topic. Just these three formulas are there. So that I'm just marking them. These three formulas, write them in the side corner of the page. These three formulas they are can be used to calculate the heat energy with respect like it. Like you can use this formula in different situations. Like if the current is given, resistance is not given, voltage is given, and the time is given, you can use this formula. If the voltage and resistance is given, you can use this. If the current and resistance is given, you can use this formula. It's up to you. Okay. It will completely depend on the question. Okay. Let me write the, yeah. Let me write this thing. The heat produced in a wire is directly, देखो, is directly directly proportional to the now everybody analyze this equation. Heat produced is directly proportional to the square of the current, yes or no? So first quantity will be the square of current, yes or no? Yes, sir. This topic is very easy, but the numericals, majority of the numericals can be formed in this from this topic. Okay, that's why this topic is very important in terms of numericals. And the resistance of the wire, yes or no? I square RT, resistance, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. How many students are there basically? Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 students are there. Only like 2 or 3 students are just giving me the yes or no. What happened to rest of you? Okay. Third one is time. I square RT, T is there. Time for which the current is flowed, basically passed. Time for which current is passed. Clear, everybody? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay. Very good. So I hope it's clear to everybody. Is there any doubt? No, sir. No, sir. sir. If the No, same sir. current is passed through the two wires, one with having higher resistance and one with having lower resistance, which will produce more heat? Can anybody answer? Same current is passed. Two wires are there. One is higher resistance, second one is lower resistance. Same current is passed through of them. What will be the value of which one will have higher heat, like basically generated? Lower resistance or higher resistance? Higher resistance. Okay, I Hiba said higher, Karishma said higher, Adil, Abdullah, Samina, Kiran, Shweta. Everybody? जल्दी से बताओ, देखो 15 मिनट ज्यादा नहीं टाइम रह गया हमारे पास. 15 मिनट से भी मुझे न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं इसमें. जल्दी जल्दी High बताओ. resistance. Okay. Who Higher. said high resistance? I think it's Shweta. And Samina, you are saying something, dear? Yes, I said higher. High resistance. What about you, Kiran, dear? So high resistance itself. High resistance. Okay, that's it. It means obviously
A current is directly, heat produced is directly proportional to the resistance. If the current is same to both of the wire, only the resistance value is there which can determine you can say heat produced. So basically, if the wire has high resistance and the heat produced is directly proportional, it means that high resistance means high value of heat. So that's what the wire that has higher resistance will produce more heat. Clear? Yes, sir. चलो ठीक है. चलो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सबसे पहले क्वेश्चन होता है बेसिक सा. ठीक है. So this question is there. This question is saying that you have a wire which is of 500 ohms and the potential difference across that wire is 250 voltage. So V is equals to 250 volt. Okay. R is equals to 500 ohms. Yes or no? And basically electric iron. We have to calculate the current. We have to calculate the heat required or energy produced. So first of all, देखते हैं current कैसे निकले. Current simple सा Ohm's law. आप कभी भी फॉर्मूला यूज करो ना, कोई वो लॉ से रिलेटेड है या उसका कोई फॉर्मूला का नेम है, so please write the name of that formula as well, like that concept. Just like I'm using the Ohm's law. So Ohm's law is V equals to IR. So I need the electric current. So I will be equals to V by R, which is 250 by 500. So what will be the value of current will be 0.5 ampere. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second thing, we have to calculate the heat energy produced. Now we have V, and 10 second is also there. T is equals to 10 second. Okay, now we have the heat energy produced in joules. Obviously, work done joules में होता है, तो heat energy भी is a kind of work done. So it will be also in joules. Clear? So हमारी energy अभी kilowatt hour में भी आएगी in the coming topic that we use basically in the commercial units. So हम लोग joules नहीं use करते, वहाँ पे kilowatt hour use करते हैं, bigger unit. अभी हम लोग सिर्फ joules में काम कर रहे हैं. So I have V, I have I, and I have T. I have given you the formula which involves the VIT. Yes or no? So I can Yes, use this sir. formula as well. I can use the formula as I square RT. I can use the formula as V square by RT. All of the formulas can be applied in the single question. Clear? Answer will be same. देखते हैं चलो. So heat will be equals to V I into T, which is equals to V is 250 into I is 0.5 into 10. So ये कितना हुआ? 50, sorry 5 and 250 joules. If you want to basically verify, so I square RT can also be written. ठीक है? So I square RT, so 0.5 को हम 1/2 में convert कर ले, it will be much easier to calculate. I is 500 into 10. So this will basically 5 times, and this will be 250. 250 into 5 will be 1250 joules. Yes or no? Answer is same, na? Yes, sir. So you can apply any of the formula. Basically, like it depends on the question. Okay, if any of the three values or quantities are given, you can use any like the formula. Okay. Okay, this question is there on the basically of the NCERT book itself. Okay, calculate the heat produced when 96,000 of coulombs of charge is passed through 1 hour, is transferred basically in 1 hour through a potential difference of 50 volt. अच्छा ठीक है, देखो. Let's calculate this question basically. What is given? Q is given as कितना? 96,000 coulombs. Yes or no? Yes, And sir. time is given Yes, as sir. 1 hour. I need to calculate in joules. So I will convert this hour into seconds, because what is the SI unit of time? Second or minute or hour? Second. Second. What about rest of you? Second. Second. Very good. So 1 hour Very is good, equals sir. to 60 minutes into 60. 1 minute is equals to 60 seconds. So it is 3600 of
seconds. Clear, everybody? And V is equals to given as 50 volt. I hope it's clear. Yes. Yes. Chalo dekho. So I need to calculate the transfer. So I is equals to Q by T. I need a current ना, at least current तो चाहिए होगा किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए. Yes, sir. क्योंकि अगर हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है, so we need the value of current using to calculate the resistance and apply this in Ohm's law. So it is 96,000 divided by 60 into 60. I'm writing 60 into 60 so that it's easier to divide. So two zeros will be cancelled. So 1, 6 1 is 6 and 3 16. Okay, so 0 will be here. So it is 160 by 6. So let's calculate, like 2 से दे देते हैं इसको, divide 2 3 is 6, so 80. So it is 80 by 3. So 80 by 3, it cannot be simplified much more. 80 by 3, it would be equals to 19, it will be equals to somewhat 26.667. So I'm not converting into decimal, so हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. It will be much easier to use this in the fractional form, क्योंकि decimals में आपको फिर multiply करना होगा. So calculation में अगर हमारा कहीं division में 3 से done हो जाएगा, तो it will be much easier. So हमारी सबसे first चीज that we have calculated is the current. Now if I need to calculate the heat energy, I need the resistance Vi into T. Okay, Vi into T, na, I can also directly apply the heat is equals to Vi into T, because I have all the three quantities. 50 into 80 by 3 into time is कितना है 3600. तो देखो यहाँ से क्या डिवाइड हो गया ना. Everybody, yes or no? Why didn't I Yes, sir. convert it into decimal? So it's called it should be in your mind and analyze the things which basically ease your calculations. Ease your calculation. Like you are in good in maths, it's okay. But if you analyze the question and analyze the steps, so it will be much easier to calculate these kinds of questions. Okay? Sometimes it's not hard work, it's called smart work. Okay? Yes, sir. कभी कभार होता है ना कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक बंदा आया भाई छुटके में काम करेंगे. ऐसे स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है. देखो हार्ड वर्क जरूरी होता है, बट स्मार्ट वर्क कभी कभार आपका टाइम एफिशिएंट होता है. एग्जाम्स में स्मार्ट वर्क चलता है कि आपको कहाँ से टाइम उसको एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है. सो नाउ 50 into 80, so it is 4000 into 1200. So it is कितना 48, 12 into 48, 3 and 5 zeros into 10 to the power 5 joule. Clear? Everybody, yes or no? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? No, sir. Yes, sir. ठीक है. देखो ये Yes, चीजें sir. होती हैं बेसिकली. अगर आप यहाँ पे यहीं पे आपको इसको दैट यू बेसिकली डिवाइड एंड टेक आउट द डेसिमल, इट विल बी समवॉट लाइक 26.67 एम्पियर. सो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम कैलकुलेट बहुत जाता. यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपको दिख गया. यहाँ पे 3 से 36 कैंसिल होता है 12 टाइम्स. तो बेसिकली आपका कैलकुलेशन 2 मिनट का एटलीस्ट टाइम बचा. एक 2 मार्कर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो इस टाइम में, या आप अपना 2 मार्कर बेसिकली एक पेपर का एक सेक्शन रिव्यू कर सकते हो एंड टाइम में. 2 minutes are enough in the boards. अगर आप एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और सर से कहते सर 2 मिनट दे दो वापस, 2 मिनट दे दो वापस, टीचर will not give you, even you basically beg for it. So okay, clear everybody? Yes. अच्छा क्या Yes, sir. बोरिंग लग रही है क्लास, ये बताओ आप. No, sir. Like it seems like you are just like, yes sir, yes sir. It's like अगर बोरिंग लग रही है तो आप बताओ मुझे थोड़ा सा. I will try to be more interactive. चलो ठीक है. सर देखो इससे ज्यादा क्या हो गया? हाँ, इससे ज्यादा क्या होगा. देखो बच्चे ने देखो सपोर्ट कर दिया मुझे. चलो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है. हमेशा अरे थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच. अच्छा चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं. हम्म, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं. ये क्वेश्चन हमारे पास स्टिल वी हैव 7 to 8 minutes, तो इतने आराम से हो जाएगा. मैं 2 minutes, आई विल गिव यू 2 minutes. It's an NCERT question, but you have to solve it properly. Like just don't like put the things in the equation and hit and try. Complete this like solve this answer properly. ठीक है.
चलिए करो. So two conducting wires are there of the same material and equal lengths and diameters are first connected in series, then in parallel. You have to calculate the heat energy produced in the parallel and series, the ratio basically. जल्दी से करो, easy question है. देखो इसमें दो चीजें अप्लाई हो रही है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स एंड द हीट एनर्जी. आपको दोनों मैंने अभी रिसेंट में हम लोगों ने कवर किया, तो इट आप नई नई है, लाइक इट विल बी इन योर माइंड. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन जल्दी से. इतने में एक सिप ले लेता हूँ पानी का. सॉल्व करो. एक से पानी का इतना हाँ, ज्यादा नजला हो रहा है, नजला हो रहा है ना, तो लाइक वार्म वाटर लेना पड़ रहा है, तो ज्यादा नहीं पी सकते ना, उसकी वजह से एक एक सिप करके ही पीना पड़ता है. नहीं, एक से बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा कम करिए. अच्छा अच्छा, सरकाज़म में बोल रहे हो, ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई. चलो चलो चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे. सर बड़े प्यारे लग रहे हैं आज आप. अरे थैंक यू यार, थैंक यू इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए. सेकंड. वेलकम. नहीं, हेयर स्टाइल आप अच्छी करके आते हैं, मतलब एवरीडे. थैंक्स यार. वेलकम. और बाय द वे, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग? लाइक इट्स गोइंग पढ़ाई गुड. कैसी जा रही है आपकी? अभी तो ठीक जा रही है, बट नजले की वजह से कुछ नहीं पढ़ पाया 2 दिन से. कल भी ऐसे ही था, लाइक बॉडी पेन वाज देयर, अ लिटिल बिट फीवर. एग्जाम हो गए? क्या हुआ? एग्जाम्स हो गए आपके? एग्जाम? नहीं अभी नहीं है, रिसेंट है, लाइक इन द January first week. No, the one which we're going on That was for, like, complete. some That was data awesome. of. That was completely awesome. अच्छा, सारे हम्म, आपके? एकदम दस्त बढ़िया से. अच्छा Okay. हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, alhamdulillah, that was completely fine. सही है सर. So Who is pray for there? us too. Yes, yeah. Okay, Samina. Okay, dear. वेरी गुड. देखो समीना ने सॉल्व भी किया इतनी जल्दी, देखो. मेरा भी हो गया. ओके, अच्छा ठीक है. चैट में बताओ आंसर जल्दी से करिश्मा मुझे, कौन सा ऑप्शन है आपका चैट में. डोंट स्पीक इट आउट. नहीं नहीं नहीं, चैट में बताओ, स्पीक, डोंट स्पीक इट आउट. ओके चलो देखो, सबसे पहले लेट्स लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी. दोज हु आर नॉट एबल टू सॉल्व, डोंट वरी, लुक एट द स्क्रीन. So basically two wires are there of equal lengths. Wires are completely equal, so the resistance value will be same. Okay Karishma, okay, because two wires that we are taking are completely of the same material and the equal length and equal diameter, so resistance they will offer will be completely same. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? So can I assume the wire resistance of the wire as X? Let X be the resistance of wire. Okay, ठीक है. So first resistance is given in series. So R1 is equals to 2x plus x, which will be equals to 2x. Yes or no? Yes, sir. Who's the? Okay, Shweta. Okay, dear. Got it. Okay. So x plus x 2x हो जाएगा. Yes or no? Yes, sir. हाँ. So I need to calculate, and the potential difference is same in these wires. Okay. So, but in the series combination, you know this thing. So first of all, देखो calculate कर लेते हैं इसका, डायरेक्टली रेजिस्टेंस से calculate कर लेते हैं. Sorry. So I1 will be equals to complete V by 2x. I1 means the current through this combination. Okay. Yes or no? I1 using Ohm's law.
2x is the resistance ना. चलो मैं रुक जाओ, मैं स्टेप को ही लिख ही देता हूँ, ओम्स लॉ लिख देता हूँ, क्योंकि sometimes ओम्स लॉ, ठीक है. So I1 will be equals to V by 2x. Clear? So let's calculate the, I know, and I have the I, R and T. Time is same to all. Okay. Option. Okay. Okay, Kiran. Okay. So H1 can be written as I1 square R1 T. Yes or no? Put the values here. I1 is what? V square by 2x whole square will be what? 4x square into R. अरे just a second. हाँ ठीक है ठीक है. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Into 2x into t. So this x will cancel this, 2 will be cancelled out this. So what is left here is vx, वो v square by t upon में 2x. This is your first equation. This is the heat generated in the series combination. ठीक है. Let's calculate this. Let's calculate the second part. The parallel combination. So parallel combination. So R2 will be equals to. So let's say 1 by R2. 1 by R2 is equals to 1 by x plus 1 by x. So it will be, denominators are same. So I can add them up directly. 1 plus 1 will be equals to 2 by x. So your R2 will be equals to x by 2. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. And the total current through the circuit will be I2 as, let me write the Ohm's law here. Okay. As I2 is equals to V by R2. Put the values. V is V and R2 is x by 2. So this 2 will go in the numerator because there is a double division. Yes or no? So it will be 2V by x. So this is your, okay. So this is the total current. So you have the total current, potential is same across both the combinations, and the time is also same across both the combinations. Okay. Clear everybody? Yes, sir. Yes, Okay. H2, let's take the H2 as I2 square R2 and T. Put the values here. So V, I square will be 2V by x whole square. Okay. R2 will be equals to x by 2 into T. Put the values here. So it is 4V square by x square into x by 2 into T. So this x will cancel this x and 2 will cancel this 2. 4, sorry, basically. So it will be 2V square T by x. This is your second equation. Okay. And you have to calculate the series and combination. So series is written first. Okay. So it means that it's asking about H1 by H2. Okay. So H1 is what? H1 is V square T by 2x. And H2 is what? 2V square T by x. ठीक है. अब देखो double division है. So in the double division, the denominator part of the denominator will have numerator and denominator as well. Double division में, yes or no? So this will go in the denominator of the upper numerator part, and this will go in the numerator of this part. Clear everybody? Yes or no? yes, sir. Yes, sir. Yes. So it completely equals to the V square T into x. Okay. And it will be equals to 2x into 2v square t. देखो v square से v square cancel हुआ, t से t cancel हुआ, x से x cancel हुआ. What is left here is, in the numerator only 1 is left, because in the multiplication, if you basically all the things are getting cancelled, only 1 will be left. And then the denominator 2 into 2 is left, so 4. So 1:4 is the correct answer. Clear everybody? So 1:4. How many of you got the same answer? Please let me know jaldi se, because I have another class, so it's almost 2 minutes late right now. Adil got the right Yes, answer. sir. Abdullah साहब, only yes sir कहने से काम नहीं चलता. आंसर निकला नहीं निकला, आपका ये बताओ. नहीं मैं तो यस सर. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, शब खैर. अच्छा ठीक है किरण. ओके ओके. हाँ, चैट में
करिश्मा डियर, आपने कहीं 2 मिस किया है, आपका आंसर 1/2 था, Yes, बट sir. आप, हाँ, तो आपने 2 मिस कहीं कर दिया, सो दैट्स व्हाई योर कैलकुलेशन इज नॉट करेक्ट। सो एक दफा गो थ्रू कर लेना, कोई मसला नहीं है। सो एवरीबडी, यस और नो, प्लीज लेट मी नो, इज दिस कंप्लीटली क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन? दिस इज a straightforward, like it's Yes, a sir. these kinds of questions will be there in this like boards, because boards likes the question like in which the variables are used instead of values, ठीक है? I've told you, Yes, मैंने sir. एक बार बताई थी, 12th क्लास में मेरा फिजिक्स का पेपर था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ऐसा क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जिसमें जो आज तक अभी नहीं, ना ही उसका सॉल्यूशन मुझे इंटरनेट पे मिल पाया। इवन आई हैव द क्वेश्चन पेपर राइट नाउ विद मी विद द 12th, अभी तक मैंने चेकआउट कर लिया, मुझे कहीं भी किसी भी पीवाईक्यू में उसको सॉल्यूशन नहीं है। वो क्वेश्चन ऐसा था, बट समहाउ जैसे तैसे करके मैंने कर दिया था, मुझे भी नहीं पता चला कि वो करेक्ट है या नहीं, आज तक मुझे भी नहीं पता चला वो करेक्ट है या नहीं। तो समटाइम्स आप लोगों को भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें वेरिएबल यूज होगा इंस्टेड ऑफ प्रॉपर वैल्यूज, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज, ओके? एंड प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स as much as possible. I've given you the book. After the assignments, PYQs, you can go through the numericals of those books as well, just to get the idea. Okay? Okay, sir. Yes, sir. चलो ठीक है फिर, Okay, sir. that's all for this class. Goodbye, take care, Allah Hafiz, good night, good evening to all. Yes. Okay, pray for So me there so is that I can assessment, also right? recover fast. हाँ, ये सब फारिद, आदिल? So assessment. नहीं बच्चे, अभी नहीं है, कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है, सो दैट्स व्हाई लाइक आई विल जस्ट गेट टू नो दैट प्रॉपर्ली कि अभी कुछ उसमें रिजॉल्व हुआ या नहीं, सो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? Okay, sir. हाँ चलो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, प्रे Yes. करिएगा मेरे लिए भी, सो दैट मैं भी जल्दी से रिकवर हो जाऊँ। Okay. चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, Okay, अल्लाह sir.